how emotional traumas and wounds of past still impact your life. हेलो ऑल अमेजिंग सोल्स, मैं हूँ बिथिका. वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल. आज हम बात करेंगे पास्ट में आपके साथ हुआ कुछ भी इंसिडेंट जिसको लेके आपको अभी तक ट्रॉमा है, वूंड्स है, इमोशनल वूंड्स है, वो आपको अभी तक कैसे इम्पैक्ट करते हैं. क्यों हमारे अंदर ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं हमको खुद को लेके, सिचुएशंस को लेके, इंसानों को लेके, ये क्यों होते हैं. पहले जानेंगे कि वूंड्स क्या क्या थे और उसके लिए आपका क्या इम्पैक्ट हुआ है. लेट्स बिगिन विद नंबर 1, रिजेक्शन. अगर चाइल्डहुड में आपको रिजेक्शन मिला है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी फ्रॉम पेरेंट्स, रिजेक्शन फ्रॉम हु यू आर. कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को रिजेक्ट करते हैं. कैसे? अगर कोई एक बच्चा जो उनके हिसाब से नहीं बना है, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप को लड़के चाहिए थे, लड़की हुई है, या फिर लड़की चाहिए थी, लड़का हुआ है, या फिर एक थर्ड जेंडर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो पेरेंट्स अगर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको लेके शेम फील करते हैं, तो दैट मीन्स दे हैव अ चाइल्डहुड पेरेंटल रिजेक्शन. सो रिजेक्शन एक ट्रॉमा है. रिजेक्शन एक वूंड है जो बहुत डीप रूटेड हो जाते हैं किसी भी इंसान के अंदर. तो ये होते हैं पेरेंटल रिजेक्शंस जो और भी बहुत डीप होते हैं. दूसरा रिजेक्शंस हो सकता है कि आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट पैटर्न है, शायद आप कुछ थॉट पैटर्न में सोचते थे इन योर चाइल्डहुड डेज, इन योर टीनेज डेज, या फिर आपके जब स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते थे, यू वांट टू टेक सम सब्जेक्ट्स, यू हैव सम आइडिया अबाउट लाइफ, बट दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड यू हैव बीन फोर्स्ड टू डू समथिंग एल्स. दैट इज ऑल्सो रिजेक्शन. Rejection in schools, in childhood days, there are a lot of children who have been rejected in schools for the way they are. A lot of time teachers class में कुछ बच्चों को ना बहुत rejected feel करवाते हैं कि they are not good enough, they don't do homework, maybe they have some other issues at home, but those teachers don't take care of it and they treat them as a rejected child. और ये सारे चीज़ unconsciously एक बच्चे के ऊपर, एक इंसान के ऊपर इट स्टे एज अ ट्रॉमा एंड वूंड. और ये जो रिजेक्शन का वूंड है, दिस गिव बर्थ टू द नेगेटिव थॉट पैटर्न और द रिजल्ट ऑफ इट कम्स आउट एज सेल्फ डाउट. ये जो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट होता है ना, किसी भी चीज़ करें कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, शायद मैं I'm not good enough, शायद that person is good enough, that person is doing better, I'm not doing this, doing that, or she is this and that, I'm not. ये सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है? ये सेल्फ डाउट रिजेक्शन से आता है. So that what it is. If you have self doubt in you, just go back in your childhood days, teenage days, or school, college days, or parental, school, everywhere. You will find that there are times when you have been rejected for your thoughts, your ideas. So this creates self-doubt in you, and this is still impacting in your life. Number 2, abandonment. Abandonment is again another wound that can be created by parents in your childhood days, where you have been left lonely. Maybe you never had the opportunity to live with your parents, or they have been working, and you have always have a missing parental presence in your life. It could be relatives who used to abandon you. They don't want you to come to their home, okay, for some reason. Maybe you were too good enough in something, or you're not good enough according to them in your childhood, so they used to abandon you. In school, in colleges, there are groups, peoples where some children are abandoned because they don't want to be taken into some groups. So these are the kind of things that can lead you to abandonment. Or also this can happen with your grandmother, grandfather. For example, you wanted to live with them. For example, from childhood, maybe you have lived with them for a certain period of time, and then for some reason they have abandoned you for some reason, and that has become a trauma in your life. That has become a deep-rooted trauma in your life, and which in turn actually caused the very big aspect, very big negative thought pattern, or you can say trauma, and that is loneliness. So abandonment gives rise to loneliness. And nowadays,
we see most of the people, they go through this loneliness and trauma. People feel, I'm alone, I have nobody. Even though they have people, they fear of people rejecting them, in the fear of getting lonely. They want to stay attached to their partners or friends or toxic group of people, because if they are not attached or if they are not with them, they will be lonely. So they feel lonely, and that's a fear in them that has been infused due to some incidents, some wounds that have happened in the past, which is affecting their life. So yes, if you have faced abandonment in your past, it is affecting you in present in form of loneliness. 3. Injustice. जब हम बच्चे थे, कभी कभी ऐसे होता थे कि माँ बाप भाई बहन के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, भाई को ज़्यादा मिलेगा बहन को कम, या फिर बहन को ज़्यादा मिलेगा भाई को कम. दिस क्रिएट्स अ मेंटल स्टेट ऑफ इनजस्टिस इन द चाइल्ड. कभी ऐसा होता है कि किसी ने चाइल्डहुड में या फिर टीनेज में किसी बच्चे के साथ कुछ फिजिकल अब्यूज़ किया है, कोई अंकल, कोई रिलेटिव्स, कोई बहुत क्लोज के मामा चाचा, कोई भी. और आप जब अपने पेरेंट्स को जाके वो बताते हो, आपके पेरेंट्स बोलते कि चुप हो जाओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. आपके अंदर एक बच्चे, मतलब जब आप चाइल्डहुड में थे तभी से आएगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, इस इंसान को दिस पर्सन शुड हैव बीन पनिश्ड बट ही इज़ नॉट. एंड ये फीलिंग ऑफ इनजस्टिस आपके अंदर रह जाएगा. आप स्कूल कॉलेज में गए हो, आपने कुछ अच्छा किया, यू हैव नॉट बीन रिवॉर्डेड, ओके, सम अदर पर्सन हैज बीन रिवॉर्डेड. तभी आपके अंदर ये इनजस्टिस का पैटर्न बिल्ड होना स्टार्ट करेगा. एवरी वुंड इज बेसिकली अ पैटर्न that has been built in you and it will stay in you. Okay, so इस तरीके का पास्ट इनजस्टिस गिव राइज टू विक्टिम माइंडसेट. जब आप इनजस्टिस आपके साथ होते रहेंगे, या फिर एक बड़ा सा कुछ इनजस्टिस हुआ है, जैसे फिजिकल अब्यूज हुआ है और उस इंसान को पनिश नहीं किया गया है, आपके अंदर एक विक्टिम स्टेट आ जाएगा. आप विक्टिमाइज करने लगोगे कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कुछ भी गलत हो लेकिन मेरे साथ तो कभी इंसाफ होता ही नहीं है. तो यू बिकम अ विक्टिम. And now, later on in your life, when you are adult right now, you victimize yourself. You go to the partner जिसके साथ आपका कुछ हुआ भी नहीं अभी तक, होने वाला है शायद, and you will say all the injustice things that has been done to you in the childhood, and then you portray yourself as a victim. आप उसके सामने जाके विक्टिमाइज करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता है ऐसे ऐसे नहीं हुआ था मेरे साथ. So you have become a victim in the eye of that person because you have victimized yourself because of that wound and that trauma that you have faced. So yes, injustice in past is affecting you in form of victimization, in form of being a victim. And lastly, number 4, the wound and trauma of betrayal give rise to trust issue. आज ये जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं ना, अपने पार्टनर को लेके, दोस्तों को लेके, किसी भी इंसान को लेके, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट में हुए गए कोई भी बिट्रेयल का एक आउटपुट है, आउटकम है. कोई इंसान को ऐसे ही ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं. ट्रस्ट इश्यूज हमको तभी होते हैं जब हम कभी भी लाइफ में, चाइल्डहुड हो सकता है, टीनेज हो सकता है, even grown up states, if you have been betrayed at any point of your life by anybody, you will have trust issues. अगर आपको ये betrayal friend से मिला है तो आपको तो दोस्तों पे भरोसा ही नहीं है, और ये most cases में होते हैं. If you guys agree to it, leave a comment below. दोस्तों से कभी ना कभी तो betrayal मिला ही है. तो इसीलिए दोस्तों से trust issues होते हैं. फिर रिलेशनशिप्स होते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन वी ग्रो अप, वहाँ पे अगर धोखा मिला है तो ट्रस्ट इश्यूज है. पेरेंट्स के साथ अगर पेरेंट्स ने कुछ बोला है एंड देन दे कुडंट डू इट और दे बिट्रेड यू इन सम फॉर्मेट, ट्रस्ट इश्यूज. सो द ट्रॉमा एंड वुंड ऑफ बिट्रेयल गिव राइज टू ट्रस्ट इश्यूज. So these are the 4 things, 4 wounds and traumas that give rise to a certain pattern. Abandonment will give you loneliness. Injustice will give you victim mindset. And betrayal will give you trust issues.
So these are your past traumas and wounds that is coming out in these formats in your present life. The motto of this video is to make you aware that why you have that trust issue, why you have that victim mindset, why you have that self-doubt. And now when you know why you have, I think you will start working on it. Always remember, you are your biggest counselor. If you can counsel yourself, no, you need nobody. But still, if you need help, you can go for a professional help. You can also talk to me. Details are in description. Do check it out. So yes, this was today's video. I hope I've shed some light on your mind, on your heart and soul. Do work on your patterns and live a happy and free life because you deserve it. I'll see you guys on the next video. Till then,